हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेपर सॉल्व करना फरवरी 2023 पेपर 2 फेब 2023 में जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था उसका फोरेंसिक साइंस पेपर 2 सॉल्व करना हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस आप जाके कवर कर सकते हैं। उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो वहाँ से भी आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले हमने जून 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो उसकी सारी वीडियोस भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, तो आप वो वीडियोस वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो भी आप देख सकते हैं, इट्स ऑल्सो अवेलेबल। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्यूल, कैसा फ्यूल? लिक्विड फ्यूल विल प्रोड्यूस इनफ वेपर्स टू बी इग्नाइटेड इज नोन एज फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, फ्लैश ओवर एंड फ्लेमेबिलिटी। सो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कम से कम टेम्परेचर जिस पॉइंट पे जो लिक्विड फ्यूल है वो वेव देता है और वो अब जलने ही वाला होता है। सो इसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें आपका जो लिक्विड फ्यूल है वो वेपर क्रिएट करेगा एंड इसके बाद वो बर्न होगा। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट को आप डिटेल में समझ सकते हैं दैट फ्लैश पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द लोवेस्ट टेम्परेचर at which it can vaporize from an ignitable mixture in the air near its surface. In the other words, it is that particular temperature at which the liquid fuel produces enough vapors at when exposed to an open flame or ignition source, it will immediately turn into flames. ठीक है, point is a critical parameter for assessing the fire hazard associated with a liquid. It provides information about the volatility of the substances and potential to form flammable vapors. ठीक है, आपने देखा होगा जब कभी भी आप अपनी गाड़ी पे पेट्रोल भराने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आप बहुत सारे मेजर्स लिखे होते हैं कि आप फ़ोन मत यूज़ करो, आप स्मोक मत करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि बोल सकते हो कि लिक्विड पेट्रोलियम बहुत ही ईजीली फायर कैच कर सकता है, इसी वजह से ये सारे मेजरमेंट्स वहाँ पे दिए होते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर फ्लैश पॉइंट जिसके बाद से वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम टेस्टिंग की बात करें, सो फ्लैश पॉइंट टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ डन यूजिंग द स्टैंडर्डाइज मेथड। कॉमन मेथड कौन सा है? जो मेथड है वो है पेनस्काई मार्टिन्स क्लोज अप टेस्टर और एबल क्लोज अप टेस्टर। सो इसके थ्रू आप फ्लैश पॉइंट पता कर सकते हो। अब फायर पॉइंट क्या है? फायर पॉइंट वो होता है इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच दिस वेपराइज्ड फ्यूल सस्टेन कंबशन एट वंस दे इग्नाइट। ठीक है, अब जो ये वेपराइज फॉर्म ऑफ फ्यूल है, जब वो कंबशन कैच करेंगे या फिर बर्न होना शुरू हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं फायर पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर, इट इज़ यूजुअली स्लाइटली हायर देन दी फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट्स फ्लैश पॉइंट के जिस बाद ही आते हैं। फायर पॉइंट क्या है? The fire point is the temperature at which a liquid fuel generates vapor that sustain combustion continuously once ignited. Ignition बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ignition के बाद ही ऐसा होगा। Unlike the flash point, at the fire point, the flame can be sustained. यहाँ पे flash point और fire point बहुत ही closely associated, आपको समझ में आ रहा होगा। The fire point is generally higher than the flash point because at the fire point, the vaporized fuel supports continuous combustion, whereas at flash point, it is associated with the momentarily flash of the flames. ठीक है, वहाँ पे तो वेपर्स ही क्रिएट हो रहे हैं टू कैच दी flames. Flash over क्या होता है? Flash over on the other hand is a phenomena in fire behavior where the contents of a room or an enclosed space reaches at a temperature and ignition level that causes all combustible material to ignite almost simultaneously. It is not specifically related to the flash or fire point of the liquid fuel. Flammability क्या होती है? Flammability is the general term which refers to ability of a substance to catch fire or supports the combustion. ठीक है, flammable word आपको बहुत जगह देखने को मिला होगा जहाँ पे ये लिखा होता है flammable। उसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं किसी भी XYZ बॉक्स के अंदर या जो भी किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर, दे आर इग्नाइटेबल, मतलब वो फायर कैच कर सकते हैं। ठीक है, सो let's move to the next question, question number 22.
the insects that can be useful in forensic entomological investigations, particularly in estimating post-mortem interval. किसमें particularly estimating post-mortem interval includes bowflies and flesh flies, hide and skin beetles, phasmids and bush crickets, dragonflies and damons flies, rove beetles and clown beetles. So इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा एट A B N E सो पोस्टमार्टम इंटरवल पता करने के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनको आपको इन्वेस्टिगेट करना है. ब्लो फ्लाइज एंड फ्लैश फ्लाइज ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है. हाइड एंड स्किन बीटल्स, रोव बीटल्स एंड क्लोव बीटल्स ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रीचर्स है. ये तीनों ही ये तीनों ही इंसेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू एस्टिमेट दी पोस्टमार्टम इंटरवल. ठीक है, देयरफॉर ए बी एंड ई आर द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हो. रिलीज एंड फ्लैश फ्लाइज, दे आर ऑफन द मोस्ट they are often the first insects to arrive at a decomposing body. Very important marking star here ताकि आपको ये पता रहे कि आपको ये चीज़ याद रखनी है. They are attracted to the odor of decay and lay eggs on the corpse. The developmental stage of these fly larvae, we call it maggots, can be used to estimate time since death. Very important. Next we have hide and skin beetles. Hide and skin beetles such as Dermestidae species are the scavengers that feed on dried flesh, skin, and hair. They are often involved in the later stage of decomposition. The presence of their larvae and beetles can provide additional information about the postmortem interval. Next, we have rove beetles and clone beetles. Rove beetles, we call it from family Staphylidae, and clove beetles, we call it Histridae, are examples of beetles that are attracted to a body. They are often found in association with decomposing remains and can play a role in forensic entomological investigations that gets us to know their time since death and postmortem intervals. So these are the important points जो कि हमें ध्यान में रखना है. Working in postmortem entomology, working to get postmortem interval. Okay, so let's move to the next question number 23. Before moving to question number 23, a quick reminder of our classes. If you are aspiring for UGC net in December cycle, you can join our classes. We have two types of classes: study material classes and video lecture classes. In video lecture classes, you will be getting all of these points: video lectures, live lectures, PDF notes अगर आप हमारे रेफर करोगे, you need not to refer any book or else anything. यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे. सारे यूनिट के टोटल 10 यूनिट्स के यूनिट टेस्ट आपको मिलेंगे. मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चंस के. एंड यू विल बी गेटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल के, पिछले 10 साल के PYQs आपको मिलेंगे. ओके, सॉल्व PYQs मिलेंगे. डिस्कशन वीडियोस आपको PYQs का देखने को मिलेगा इन वीडियो लेक्चर कोर्स. इन स्टडी मटेरियल कोर्स यू विल नॉट गेट वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स और previous year 10-year question paper का discussion video. Otherwise you will get the solved papers, you will get the PDFs, you will get everything, every PDF thing you will get, every notes you will get. And it's just video lectures में videos included है, live lectures included है, जो कि study material course में included नहीं है. You can join these classes according to your preparation and your need to crack the upcoming UGC NET examination, UGC NET JRF examination for December 2023. Thank you everyone. Let's start moving forward with February 2023 paper 2 forensic science. Question number 23 says, in the case of a firearm, which of the following phenomena is governed by Newton's third law of motion? Spin, stringing, retardation एंड रिकॉयल. सो इसका करेक्ट आंसर है रिकॉयल. रिकॉइलिंग इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन बैलिस्टिक्स. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी रिएक्शन और एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. और रिकॉयल में भी ऐसा ही होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फायर आर्म. व्हेन अ बुलेट इज फायर forward and gun experiences equal and opposite force backwards, which is observed as a recoil.
ठीक है. Recoil in firearms is associated with Newton's third law, which is very important. Detailed discussion आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. Just please go through it and we will move forward to next question number 24, which is match the following. You have to match list 1 and list 2 together. So यहाँ पे आपको दिया हुआ है cannabis, cocaine, mercury and arsenic. List 2 में you have some disorder and diseases like the Mad Hatter disease, run amok, wrist drop and Magnan's symptom. So इसका correct match क्या होगा? Let's see. Cannabis is responsible for the situation called run amok. Cocaine is responsible for Magnan's symptom. Mercury is responsible for Mad Hatter disease. Arsenic is responsible for the condition of a wrist drop. ठीक है. So ये कुछ chemicals है which are responsible for these disease and disorder which happens in humans because of these chemicals like cannabis, cocaine, mercury and arsenic. That's why this is the correct matching. Just go through it. जिसमें correct matching होगा, choose that option. Let's move to next question number 25. Physical effects of the stimuli abuse generally include which of the following? Dilation of pupils, slow heartbeat, raised blood pressure and dizziness. ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं स्टिमुलेंट्स के अब्यूज की तो क्या होता है? एक्टिवेशन होता है आपके बॉडी में. एक्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट. स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? दे ट्रिगर आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर ये डिप्रेसेंट होते तब जाके डिप्रेस्ड फीलिंग होती है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होता है, स्लो डाउन होता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है राइज ब्लड प्रेशर वाला पॉइंट. सो सी दो ऑप्शंस में है. इन दिस वी हैव सी, हियर वी हैव सी. सो रेज्ड ब्लड प्रेशर विल बी एसोसिएटेड विद स्टिमुलेशन. डिजीनेस तो हो ही नहीं सकता, ये होता है आपके डिप्रेसेंट के केस में. तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो. ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. Physical effects of stimulant abuse generally includes dilation of pupil and raised blood pressure. A and C is the correct answer. Dilation of pupil is again a very important point. Raised blood pressure is again very important क्योंकि जब stimulation का effect आता है तो every stimulant thing happens inside the body. ठीक है. डिप्रेसेंट में क्या होगा? डिप्रेसेंट में डिजीनेस होगी, स्लीप आएगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी. ठीक है. ये डिप्रेसेंट के केस में होगा, बट स्टिमुलेंट के केस में इट विल बी opposite. Okay, so next question क्या पूछ रहा है? The earliest regression formula for the estimation of stature from the long bones was developed by Bertillon, Hrdlicka, Trotter and Glasser and Pearson. तो इसका correct answer है Sir Pearson. He was the responsible person to use long bones and to estimate the age from long bones. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. असर्शन रीजन क्वेश्चन है. असर्शन कह रहा है नाइट्रोग्लिसरीन हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज over black powder and reason says it contains both fuel and oxidizer element in the same molecule. So इसका correct answer है assertion is correct, reason is correct and reason is the correct explanation to A. अच्छा, assertion reason को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको तो नॉलेज चाहिए. ठीक है. For example, with all due knowledge I have, nitroglycerine is a greater advantage over black powder. That we know it is absolutely correct. ये true है. nitroglycerine ज़्यादा अच्छा है black powder से, ये तो हमें पता है ना. अब यहाँ पे आप लगा दो because to get to know if reason is correct और reason सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं असर्शन का. सो अब वापस से फिर से पढ़ो पूरा स्टेटमेंट. नाइट्रोग्लिसरीन हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज ओवर ब्लैक पाउडर बिकॉज इट कंटेन्स बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर एलिमेंट इन द सेम मॉलिक्यूल. ठीक है. ये भी सही है क्योंकि जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसमें फ्यूल भी है, ऑक्सीडाइजर भी है, राइट. इसी वजह से ब्लैक पाउडर से ज़्यादा वो अच्छा रिजल्ट आपको देता है, एडवांटेज आपको मिलती है. जैसे ही आप बिकॉज लगा के ये दोनों सेंटेंस को पढ़ोगे, इफ़ बोथ द सेंटेंस आर मेकिंग सेंस टुगेदर, तब जाके आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाता है. इफ़ इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस दैट, फिर अगर हम पढ़ते और बिकॉज से कोई मैच नहीं हो रहा होता, एक सेंटेंस फुल बन नहीं रहा होता, तो हम कहते कि ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए. बहुत ईजी होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना. बस बिकॉज लगाना असर्शन रीजन के बीच में, और आपका नॉलेज जो है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए फॉर द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. अरेंज द फॉलोइंग शॉटगन कार्ट्रिजेस अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ
palettes in increasing order: A, triple A, SSG, SG, and LG. So here we have correct sequence. First we have A, that is a larger short size. फिर we have triple A, SSG, SG, and LG, that is smaller short size. ठीक है, that's why correct order is E, C, D, B, A. Okay, next question, question number 30. Winker's formula is used for the determination of which of the following: breath control concentration, blood alcohol concentration, urine alcohol concentration, stomach alcohol concentration. So the correct answer for this question is blood alcohol concentration. This formula is associated with alcohol concentration, and it determines the blood alcohol concentration in the blood. The BAC is typically determined using various methods that includes breath test also. ठीक है, blood test से भी पता लगता है, and sometimes urine test also. Breath tests are often conducted using a breath analyzer devices, very important, while blood test is directly measure the alcohol content in the blood. Okay, so this Winkel's formula is related with BAC, blood alcohol concentration. In the next video we will start from question number 31. यहाँ तक हमने cover कर लिया है. 10 questions we have already discussed from question number 21 to 30. In the next video we will start with question number 31, and we will cover till question number 40. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. If interested, you can join our classes according to your preparation requirement and needs. आप कोई भी classes join कर सकते हो, चाहे आप study material classes join करो या फिर आप video lecture classes join करो. If you want to get in touch with me and if you need any help related to studies, you can text us. WhatsApp support number is given in the description box. We are present in Instagram and Telegram as well. Links are in the description. Application link is in the description also. Thank you again. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.